صل على محمد وآل محمد. जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, हर तमाशे बिसकीना ने, हर तमाशे बिसकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे बारों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बारों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सरशी में मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल जब मुझे आपके कातिल Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous vivons Arbaïn, 40 jours après la tragédie de Karbala, soit le 20e Safar au calendrier islamique. 40 jours après que l'imam al-Hussein ait offert son sang pour préserver la vérité de l'islam. Arbaïn n'est pas seulement un souvenir, c'est le renouvellement du pacte entre nous et Imam Hussein. C'est la preuve que 40 jours après la plus grande injustice, le message de Karbala est encore vivant dans nos cœurs. Imam Hussein, quand il est arrivé sur Karbala, il avait acheté la terre où il avait décidé de camper et il avait demandé « Enterrez-moi ici et quand mes visiteurs viendront, servez-les en invités pendant 3 jours. » Après le massacre de Ashura, les tentes brûlées et la captivité, ce sont Bibi Zainab et l'imam Ali Zainul Abidin qui ont porté la voix de l'imam Hussein. En ce 40e jour, ils retournèrent à Karbala au tombeau de l'imam Hussein pour pleurer et pour affirmer devant Allah que le sang de l'imam ne serait jamais oublié. Aujourd'hui, des millions de croyants marchent vers Karbala depuis toutes les directions. Chaque pas qu'ils font est une déclaration silencieuse. Ô Hussein, nous sommes avec toi, nous n'abandonnerons jamais ta cause. Arbaïn est un voyage d'amour. La marche à environ 92 km de la ville de Najaf à Karbala. Toute la route est divisée en 1452 poteaux. Pour la facilité des pèlerins, où la distance entre chacun des poteaux est de 50 mètres. L'heure approximative de marche est de 16h à 23h. Mais les pèlerins continuent d'arriver à Karbala après avoir marché pendant environ 4 à 5 jours. La marche commence officiellement le 16 Safar, 4 jours avant Arbaïn. Les pèlerins devraient arriver à Karbala le soir ou le soir avant Arbaïn. Tout au long de la route Najaf-Karbala, des aliments et des services tels que le soutien médical, le logement, les aires de prière, les lieux de repos, les rafraîchissements et même les services de massage sont offerts gratuitement pour ceux qui participent à la marche. Tous ces services sont fournis individuellement par des citoyens irakiens et certaines communautés étrangères également. Les pèlerins sont généralement hébergés la nuit dans ces mawqib qui sont des places avec tous les services nécessaires pour une nuit de séjour. Dans les mawqib plus grands et bien équipés, les pèlerins sont également équipés avec douche pour baigner. À intervalles, les habitants irakiens sont également vus offrir
pèlerins une nuit de séjour ou de repas dans leur propre maison à proximité. Des guides et des soldats de l'armée sont également visités tout au long de la route à des fins d'orientation et de sécurité. Il n'y a qu'un seul endroit dans le monde où se tient le plus grand rassemblement du monde. Des gens y mangent gratuitement, distribution des boissons et de tous les produits essentiels sont offerts librement. Une invitation venant du cœur, venez à moi, afin que je puisse suivre la volonté de l'imam, je devais servir les avars. Sur Arbin, Chelum, j'ai vu qu'au nom de Mola, Imam Hussein alayhi salam, les pauvres nourrissent les riches et les occupés au service de Mu'minin. Voyage d'amour. Les pèlerins portent généralement un seul sac à dos chacun, contenant tout ce qu'ils pourraient vouloir emporter avec eux, même pour le voyage. Arbin nous enseigne 3 choses. 1. La fidélité, rester fidèle à la vérité même après l'épreuve. 2. La patience, supporter les difficultés pour l'amour d'Allah. 3. L'engagement, transformer notre deuil en action juste dans notre vie. Nous ne marcherons peut-être pas tout physiquement vers Karbala, mais nous pouvons marcher avec notre foi, notre comportement et notre loyauté aux Ahlul Bayt alayhi salam. En ce jour, prions pour que nos cœurs soient toujours liés à l'imam Hussein alayhi salam, que nos vies reflètent son message et qu'Allah nous compte parmi ceux qui, au retour de l'imam al-Mahdi alayhi salam, répondront à son appel comme les compagnons de Karbala ont répondu à l'imam Hussein alayhi salam. والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Chelum Imam Hussein alayhi salam एक यादगार दिन छे जे फकत याद माटे ज नथी बल्कि पैगाम अने दर्द माटे छे. પેલું અરબઈન કરબલાના શહીદોનું ત્યારે મનાવ્યો ગયો જ્યારે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામ અહલુલ બૈત સાથે શામની કેદમાંથી આઝાદ થઈને કરબલા આવ્યા. જ્યારે શહીદોની કબ્ર પર ઝિયારત કરી અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો પૈગામ ફરીથી દુનિયા સુધી પહોંચાવ્યો. ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે ઝિયારત-એ અરબઈન મોમિનની નિશાનીઓમાંથી એક નિશાની છે. આ સિર્ફ એક આમાલ નથી બલ્કि આકીદાનો ઇઝહાર છે કે આપણે ઇમામ સાથે વફાદાર છીએ અને તેમનું મિશન જિંદા રાખશું. રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે જે ઇન્સાન હુસૈન અલૈહિસ્સલામની કબ્રની ઝિયારત કરે અલ્લાહ તેમના ગુનાહ માફ કરે જેમ કે તેમના પેટમાંથી હમરા નીકળ્યા હોય. શાયર ખેત से इमाम हुसैन निबारा में कौन कहता है हुसैन मर गए, कौन कहता है हुसैन मर गए, कत्ल के बाद भी जिंदा है. जहाँ जुल्म के खिलाफ कोई करा होता है, जहाँ जुल्म के खिलाफ कोई करा होता है, वहाँ हुसैन का परचम बुलंद होता है. अरबईन पे आए हम, अरबईन पे आए हम, तेरी कब्र को चूमने के लिए आए शहीद करबला, अपनी उम्मत को बचाने के लिए. सलवत. બીજી રિવાયતમાં છે કે મૌલા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારતનો સવાબ એક હજ અને એક ઉમરા કરતાં પણ વધારે છે. ઝિયારતે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ફઝીલત ગુનાહ માફ થાય છે, દિલમાં સુકૂન અને રૂહાનિયતમાં વધારો થાય છે, દુનિયા અને આખિરતમાં ઇમામની શફાઅત નસીબ થાય છે, જુલ્મના ખિલાફ બોલવાની હિંમત પેદા થાય છે. આજનો પૈગામ ચેલુમ
अपने याद करावे छे कि करबला सिर्फ एक जंगनो वाक्यो નથી એ હક અને બાતિલનો ફેસલો હતો. હર અરબઈન આપણે ઇમામનો પેગામ ફરીથી જીવનમાં લાગુ કર્યો. जुल्मना सामने चुप ना रहवो, दीन माटे कुर्बानी आपवो, अखलाक अने इंसाफ पर कायम रहवो. है आजादारो चहलोना दिवस करबलानो मंजर ने विचार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शामમાંથી પછી આવ્યા. કરબલાનો मैदान અત્યારે પણ ખૂનની ખુશ્બુથી બાયરો. આવામાં બીબીયાનો अवाजो अने फरियाद. बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम शहीदोनी कब्र पर उभा रही अने खेचे, भैया हुसैन अमे पछो आवी गया. तमारो पैगाम दुनिया ने सुनावी दीधो. पण मारा भाई हुसैन है तुम अमानत मने सौंपी गयो हतो. सकीना ने हिफाजत નથી કરી શકી. ભાઈ તમારા પછી અમને કેદમાં રાખ્યા. જુદા જુદા जुल्मो કરવામાં આવ્યો. અલા લાનતુલ્લાહ લિલ કૌમિ ઝાલિમીન. ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન.